Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is session 3 of class 5. I am Miss Enam, your social studies teacher. We are on chapter 6, Minerals, Power Resources and Industries, from unit number 4, Geography of Pakistan. Okay students, continue this chapter. Open page number 50. Let's start reading. Power resources. Pakistan uses much less energy than many other countries. For example, we use 80 times less energy than the United States. Pakistan does not produce much energy and does not have enough to meet its needs. The energy we use in Pakistan comes from oil, gas, water and coal. Minor energy sources include nuclear, LPG, liquefied petroleum gas, biogas and solar energy. So students, now today we will discuss about power resources. I told you about power resources in session 1. Now repeat again. Power resources are those resources provide us energy to perform various activity. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए पहले आपने अपने मोबाइल को चार्ज करना होगा. मीन्स इस वक्त आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से. तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं उनको पावर रिसोर्सेज कहा जाता है. पाकिस्तान यूजेस मच लेस एनर्जी दैन मैनी अदर कंट्रीज, यानी कि मीन्स पाकिस्तान जो एनर्जी यूज़ करता है वो दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम होती है. फॉर एग्जांपल वी यूज़ 80 टाइम्स लेस एनर्जी दैन द यूनाइटेड स्टेट्स. फॉर एग्जांपल जैसे हम 80 टाइम्स एनर्जी जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट से 80% कम यूज़ करते हैं. Pakistan does not produce much energy and does not have enough to meet its needs. क्योंकि पाकिस्तान does not energy produce, पाकिस्तान में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इतनी रिसोर्सेज नहीं होती जो हमारी नीड को पूरा कर सके. The energy sources include nuclear, LPG, liquefied petroleum gas. The energy we use in Pakistan comes from oil, gas, water and coal. और पाकिस्तान में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ऑयल से होती है और वाटर से और कोल से. कोल मीन्स कोयला. माइनर एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड न्यूक्लियर, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी. और कुछ एनर्जी सोर्सेज जो हमारे पास है इनमें न्यूक्लियर है, सोलर एनर्जी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, बायोगैस है. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पावर रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं. एनी सोर्स दैट कैन बी यूज टू जनरेट पावर कैन बी टर्म्ड एज अ पावर रिसोर्स. Okay students, let's start reading about petroleum. Petroleum. In 1961, the Oil and Gas Development Corporation was set up in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas. Petroleum is made from oil which is found deep below the surface of the earth. Pakistan does not have enough oil for its needs. A huge amount is imported every year. Almost 50% of the petroleum we use goes to run our cars, trucks, buses and aeroplanes. Petroleum is also used to produce power in industry and for domestic and agricultural purposes. Besides petroleum, oil is also used in the manufacturing of many other products such as lubricants and even cosmetics. So student, talk about petroleum. In 1967 में हमारे पाकिस्तान में एक कॉरपोरेशन सेट हुआ था जिसका नाम है ऑयल गैस डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन, और वो इसलिए सेट हुआ था कि पेट्रोलियम को और एक्सप्लोर किया जा सके, यानी कि उसको तलाश किया जा सके। तो मीन्स यानी कि ऑयल और गैस की मज़ीद डेवलपमेंट, इसकी प्रोडक्शन, रिफाइनिंग से लेकर सेल आउट तक तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस कॉरपोरेशन की है। पेट्रोलियम इज मेड फ्रॉम ऑयल विच इज फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो पेट्रोलियम जो मिलता है, जो बनता है पेट्रोलियम, वो ऑयल से मिलता है, और ये हमें अर्थ के डीप में जाकर, बहुत नीचे कहीं डीप में जाकर मिलता है। बट पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ oil for its need. A huge amount is imported every year. लेकिन पाकिस्तान के पास इतना ऑयल नहीं है कि वो इसकी नीड को पूरा कर सके। इसीलिए ह्यूज अमाउंट में यानी कि एक बड़ी मिकदार में ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है हर साल हमारी कंट्री के लिए। यानी कि हम जो है वो ट्रेड के थ्रू दूसरी कंट्री से ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में, लार्ज अमाउंट में लेते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेट्रोलियम वी यूज गोज टू रन आवर कार्स, ट्रक्स, हाउसेज एंड एरोप्लेन्स। तकरीबन 50% पेट्रोलियम जो है वो हमारी व्हीकल्स में ही यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये जैसे हमारी गाड़ियां हैं, लाइक कार, ट्रक्स, जहाज, एरोप्लेन्स, इन सब में जो है ये मुसलसल कंटिन्यूसली हमारी रनिंग में रहती हैं, इसलिए इनमें जो है वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस पावर इन इंडस्ट्री एंड फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस। पेट्रोलियम जो है वो पावर को भी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर में मतलब हमारी फार्मिंग के लिए भी जो पेट्रोलियम जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके टूल्स में, उसकी जितनी भी फार्मिंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं उसमें, और इंडस्ट्रीज़ में जो रिफाइनिंग, जो मिनरल्स की माइनिंग होती है, उसकी काट छांट, उसकी माइनिंग में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए भी हम पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। Besides petroleum, oil is also used in the manufacturing of many other products such as lubricants and even cosmetics. मतलब और ऑयल को हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स सच एज लुब्रिकेंट्स एंड इवन कॉस्मेटिक्स। लुब्रिकेंट्स मीन ग्रीसिंग क्रीम्स, यानी कि जो चिकनाई वाली क्रीम है जिसे हम अमूमन अपने फेस पर यूज़ करते हैं, हैंड्स पे, फुट पे हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह कॉस्मेटिक्स जो हमारी यूज़ होती हैं उनमें भी पेट्रोलियम यूज़ होता है। So petroleum used in some manufacturing products like cosmetics, and it is also used to produce power, and the 50% petroleum used, they are run car, buses, aeroplanes, etc. Okay, this is about of petroleum. Oil fields. There are oil fields in the Potohar Plateau in Lower Sindh. The Lower Sindh oil fields were discovered in 1981 when oil was found at Khaskheli. Since then, 20 other fields have been discovered in this region. 60% of Pakistan's oil comes from Lower Sindh. In 1951, the first oil field was discovered at Khor. Since then, a number of oil wells have been drilled in this region. Now, student, first I would like to tell about oil fields. Oil field का क्या मतलब है? ऑयल फील्ड मीन्स तेल का चश्मा, मीन्स जहाँ से हम ऑयल ढूंढते हैं, उसे तलाश करते हैं, जहाँ से ऑयल निकलता है उस जगह को ऑयल फील्ड कहते हैं. It is the place where we can find oil and we can like it's a surface on the earth. From here we can produce oil, we can find oil. All right, student. There are oil fields in the Potohar Plateau in Lower Sindh. Means there is a place in Pakistan
that name is Potohal Plateau. So there we can find oil fields. And in lower Sindh, लोअर सिंध मीन्स अंदरूनी सिंध, यानी कि अंदरूनी सिंध में भी हमें ऑयल फील्ड्स मिलती हैं. The lower Sindh oil fields were discovered in 1981 when oil was found at Khas Kheli. Since then 20 other fields have been discovered in this region. Lower Sindh में जो oil fields हैं वो कब discover हुई थी? Discover means यानी कि कब हमें मिली थी, कब हमें उसके बारे में पता चला था. इन 1981 यानी कि 1981 में हमें ये ऑयल फील्ड्स मिली थी. व्हेन ऑयल वाज फाउंड एट खसखेली. खसखेली जो है वो एक जगह है सिंध में जहाँ में सबसे पहले ऑयल मिला था, ऑयल फील्ड मिली थी. सिंस देन 20 other fields were discovered in this region. और उसके बाद हमें मज़ीद 20 ऑयल फील्ड्स जो थी उसी इलाके से, उसी जगह खसखेली के मुकाम से मिली थी. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ऑयल आता है 60% वो लोअर सिंध से आता है, अंदरूनी सिंध से ही आता है. In 1951 the first oil field was discovered at Khor. यानी लेकिन 1951 में जो फर्स्ट ऑयल फील्ड थी पाकिस्तान में वो मिली थी खौर के मैदान में, यानी कि खौर के मुकाम में, खौर के मुकाम से डिस्कवर हुई थी. पाकिस्तान का इलाका है खौर. और since then a number of oil wells have been drilled in this region. और उसके बाद oil wells मीन है तेल के कुएं, और उसके बाद वहां पे बहुत सारे तेल के कुएं जो थे वो बना दिए गए थे. Okay students, now move on page number 51. So let's talk about oil refineries. First reading, oil refineries. Before it can be used, oil has to be refined or made pure. This is done at a refinery. There are several refineries in Pakistan. The Attock refinery at Morga, Rawalpindi is the oldest. So students, we have studied about oil field. Oil field वो होती है जहां ऑयल मिलता है, जहां ऑयल डिस्कवर होता है. लेकिन ऑयल रिफाइनरीज वो होती हैं जहां ऑयल रिफाइन होता है. मीन्स व्हेन द ऑयल फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस एट वेरियस डेप्थ. Students, you will be very surprised to know that crude oil means a thick, black, sticky fluid comes out of the earth. Before it can be used, oil has to be refined or made pure. This is done at a refinery. Means oil जब हम ऑयल को डिस्कवर करते हैं तो वो हमें किस हालत में मिलता है. जब हम ज़मीन में से, अर्थ में से मतलब उसको डिस्कवर करते हैं, ऑयल को निकालते हैं, हमें हासिल होता है, तो वो हमें किस हालत में मिलता है? बिल्कुल स्ट्रीकी, ब्लैक, थिक, इसलिए यानी कि गाढ़ा माया होता है, एक चिपचिपा टाइप का, तो इसलिए और ना वो यूज़ करने के काबिल होता है. सो इसलिए इसे हम पूरे प्रोसेस से, रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं. इसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस मीन्स यानी कि उसको सफाई के तमाम मराहल से गुजारने के बाद उसे डिफरेंट मशीन्स के थ्रू इसकी सफाई की जाती है, और इन तमाम प्रोसेस से गुजारने के बाद उसे जो है वो इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन दिस स्लाइड. After that, we can use those oil in cooking and different purposes. There are several refineries in Pakistan. The Attock refinery at Morga, Rawalpindi is the oldest. और पाकिस्तान में इसकी जो ये मशीनरीज हैं वो अटक के मुकाम पर हैं, अटक के मुकाम मोरगा में. और इसके अलावा ओल्डेस्ट रावलपिंडी जो है वो सबसे पुरानी जो इसकी रिफाइनरीज मशीन है वो है रावलपिंडी पे. ओके स्टूडेंट्स,
Write down question answers in your copy. Write question number 5. Explain the importance of power resources for our country. Answer. Power resources are important because they are needed for the running of industries, households and transportation. Question number 6. Describe the other major industries in Pakistan. Answer. Woolen textiles, art silk, chemicals, cooking oil, fertilizers, cement, iron, steel and engineering are major industries of Pakistan. Homework. Dear students, do exercise A of chapter number 6 in copy from book page number 57. Exercise A. Make your own glossary about the minerals of Pakistan by completing the table below using the names of the correct minerals. My glossary of the minerals of Pakistan. स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए का तो ये आपका क्वेश्चन है इसमें से आपको और ये जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं 6 सेंटेंस हैं ये आपको हिंट्स दिए हुए हैं कि आप इससे जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस बुक में से ये टेबल भी आपको दिया है आपको पूरा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है वो आपको पूरा डिटेल्स में आपसे डिस्कस किया गया है तो उसमें से आप फाइंड आउट करके इसके आंसर्स नोट करेंगे ये आपका होमवर्क है और इसे आप कॉपी डाउन करेंगे ओके और नोट दिस चैप्टर इज कंटिन्यू ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज